the graph between the square root of frequency of a specific line of characteristic spectrum of X-rays and the atomic number of target will be. हमें बताना है कि relation between the graph between the frequency, root of frequency and the atomic number Z. From the very famous law, Mosley law of X-rays, we know root of nu is directly proportional to Z minus B, or root of nu is directly proportional to atomic number Z. So this will give a straight line, and so straight line तो हमारे ऑप्शन ए बी एंड सी तीनों में है, एंड डी में हमारा एक कर्व पाथ है, तो ऑप्शन डी तो हमारा गलत हो जाएगा. सो हमें बताना है कि ए बी एंड सी में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा. सो एट z इज इक्वल टू 0, ऑल्दो ऐसा होगा नहीं, द स्लोप इंटरसेप्ट विल कम आउट टू बी नेगेटिव. अगर हम इसको एक्सट्रापोलेट करें तो एक नेगेटिव इंटरसेप्ट देगा. सो root of nu will come out to be negative quantity. So as per options, option B is the right answer.